right? So might as well invest your time there, because if you don't qualify this, it makes zero sense for you to study mains वगैरह. क्या फर्क पड़ता है फिर जब तुम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करोगे, कितना भी मेंस पढ़ लो, कोई सेंस ही नहीं बनता, right? And it hurts the most if you can't clear prelims because CSAT अटक गया, right? अगर if you're thinking that oh I'm just going to wake up one day 7 days prior to the exam and मैं बस कर लूंगा RC से निकाल लूंगा, not going to happen. Now compare this with yourself. You would know तुम्हें कितनी economics आती है, कितनी science and tech आती है, कितनी environment आती है, right? It is because clearly it's not just about language. It's not about vocabulary. English आती है कि नहीं. It's basically about your underlying concepts समझ में आते हैं कि नहीं, वो complicated reading समझ में आती है कि नहीं, right? So you have to really assess for yourself as to what your strength is, right? So about 70 marks, will you not get 17? 17 तो आ ही जाओगे, ले ही आओगे, right? That is what you'll have to do, right? In terms of strategizing, clearly understand this. You don't have to score 180 here. It does not get counted for. Right? चलो जो इंस्टीट्यूट ने गलत बता दिया हुआ है, राइट? हाउ कैन यू कंप्लीटली बी सर्टन कि इससे मैं क्लियर कर दूंगा कट ऑफ? क्यों नहीं पूछे, राइट? दे आर सेटिंग द एग्जाम ना, तुम एस्पिरेंट हो, वो कमीशन है, राइट? दे वांट टू सेट इट हार्डर देन दिस, दे विल सेट इट हार्डर देन दिस. तुम कौन हो भाई जिसको इजीएस्ट? And I remember there was this kid who would come every day to class when we used to take CSAT की test discussion जब हम करते ना. और this person, I can guarantee you, he was absolutely clueless about English. मतलब वो देख के भी पता चलता कि English इतनी correct नहीं है, right? He would take all discussions and I specifically told him करना क्या है, right? I met him and I fortunately met him अभ्यास की discussion में this time around, and I saw him there sitting there. He had cleared prelims, right? I told him specifically to do one thing, which was you get the paper. First thing is you will mark all questions on LR and quantitative aptitude. Right? And he would be sitting for logical reasoning, quantitative aptitude. He had like हमारे साथ अच्छी rapport हो चुकी थी उसकी. And then he figured that across all questions, eventually you have to get 27 right. 27 right and nothing wrong. Right? That's how you clear the cutoff. Now 27 right out of 80 questions should not be a big deal. Right? If you know which questions are easy and which questions are difficult. Right? When we did logical reasoning, you would have, पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने, how many of you really continued with it, right? But you would clearly notice कि अगर dices आता तो easy question है, right? अगर तुम्हारे पास circular arrangements का question आता है without many layers, then it's an easy question. If there is a circular arrangement with inwards and outwards mentioned, then it's a more complicated, not a really complicated question, but it will take you more time, more focus. Right? Similarly, when you get questions on calendars after what we did is fundamentally easy. ज़्यादा कुछ difficult उसमें है नहीं. Right? Clocks में बहुत लोगों को confusion होती है, but clocks में भी कुछ questions हैं which are fundamentally easy. Your ability to know what question is easy is going to be critical here. Right? Why? Because remember, this is not a game of speed. Speed नहीं चाहिए. चाहिए क्या? Accuracy. Right? Eventually, out of 80, you have to do 27, 28 right. Now, what I was telling the other kids was, if you look at the questions, CSAT के question paper उठाना 2011 onwards, right? Till the time it was made qualifying. जब तक इसको qualifying किया गया, I first wrote it in 2013. There has been no paper, aptitude का paper, which has been easier than that. I told you, without practice, I scored 184. Right? And I know anybody जो मेरे batchmates थे सारे के सारे 178, 160 something. It was that easy back then. Now, ever since it has been made qualifying, specifically since it has been made qualifying, they are increasingly keeping one section very, very complicated. Ordinarily, to keep it qualifying का मतलब क्या? Most people will rely on RCs because they were traditionally easier, right? तुमको लगता था कि and RCs used to be 40, 40 क्वेश्चन RC के आते थे, तो आराम से RC कर लेंगे, कौन पढ़ता है क्वांट, राइट? धीरे धीरे उन्होंने RC का सेक्शन किया पहले कम, उसके बाद उन्होंने RCs को कर दिया कॉम्प्लिकेटेड, राइट? दैट वाज बेसिकली अ नज टू यू कि बॉस इसके बेसिस पे नहीं होगा, राइट? अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट ओ आई एम जस्ट गोइंग टू वेक अप वन डे 7 days प्रायर टू द एग्जाम एंड मैं बस कर लूंगा RC से निकाल लूंगा, नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? दिस शुड टेल यू दैट ordinarily there is a scope for you to get questions wrong. Do you think if I appear tomorrow, do you think I'll get all 27 questions right or all 27, 28 questions wrong? Questions right? Absolutely not. 3-4 तो मेरे भी गलत होंगे, right? And I have full faith in me that I know language. इतनी मेरी बुरी language है नहीं, and on top of it, I think I know economics, I know policy, I know a lot of things. But
स्टिल आई वुड टेक दैट लीवे कि 4-5 तो मेरे भी गलत होंगे. राइट, नाउ कंपेयर दिस विद योर सेल्फ. यू वुड नो तुम्हें कितनी इकोनॉमिक्स आती है, कितनी साइंस एंड टेक आती है, कितनी इन्वायरमेंट आती है. राइट, इट इज बिकॉज क्लियरली इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज. इट्स नॉट अबाउट वोकैबुलरी, इंग्लिश आती है कि नहीं. इट्स बेसिकली अबाउट ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग समझ में आती है कि नहीं. राइट, सो यू हैव टू रियली असेस फॉर योर सेल्फ as to what your strength is. Right, the easiest strategy for qualifying CSAT is, one, mark all those questions, do the low hanging fruits. Right, make sure in the first 50 minutes you get nothing less than 50 marks. These questions right up kar hi lo out of 50 quantitative aptitude and logical reasoning. 50 to 55 क्वेश्चन आते हैं कंबाइंड दोनों के. राइट, 50-55 में से तुम 20 नहीं राइट कर सकते क्या? राइट, इफ यू डू आफ्टर लॉजिकल रीजनिंग, जस्ट गो बैक होम एंड फाइंड आउट ऑल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर. राइट, फर्स्ट थिंग इज यू पिक क्वेश्चंस फ्रॉम डाइसेस एंड क्यूब्स, try to do them and you will find there was nothing that you can't do. Right, now questions on calendars, clocks, there is no question that you can't do. Right, when you know already कि यार कुछ sections हैं जो मेरे areas of strength हैं, then I will make sure that if those questions come, I will not get them wrong. And I have to do those questions पहले, not these पहले. Can you imagine that this is the first section that you attempt? Right, and in the first section, because you would, if your complete strategy is कि मुझे RC ही write करना है, then do you not think it's a little too complicated? Right, will you not get complicated, will you not get confused exactly in the exam? जब आप बैठे होगे और आप देख रहे होगे यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है. Right, now you would want to read this again. Right, now you would want to make a choice. Right, ordinarily what, imagine this, you have 60 minutes, sorry, you have 120 minutes to get to almost about 80 questions right. Right, that means how much minutes? 1.5 minutes per question. 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन आपको राइट करना है. If you are taking a minute to read this and half a minute to do this, exactly ulta karna hai. You take half a minute to read this, 1 minute to solve this one. Now, if imagine this is the first section that you attempt, clearly you want to read this again and then make a choice. So, जो 1.5 मिनट में होना चाहिए था वो होगा 2 मिनट में, 2.5 minutes, sometimes 3 minutes also. Right? Doing RCs first makes you lose the track of time. तुम्हारे दिमाग में पता नहीं होगा कि तुम्हें रुकना कहाँ है. Right, and then after RCs, when you will be not very sure कि मेरे कितने सही हैं, कितने गलत है. Now imagine, now you have half an hour remaining, and now you are attempting quantitative aptitude and logical reasoning. होगा. Right. First thing is do quantitative aptitude, do logical reasoning first in a very strict time-bound manner. Maybe take 50 minutes, maybe take 40 minutes, nothing more than 50. Right, depending on what your strength is. अगर तुम्हारी strength ही quantitative aptitude and logical reasoning है, give an hour to it. कि 1 घंटा ले लूंगा, मैं उसी से क्लियर कर दूंगा कट ऑफ. उसके बाद मैं आराम से 1 घंटे में पढ़ता हूँ आरसीज में. कितने भी गलत कर दूं 17 नंबर तो आ ही जाएंगे. राइट, आउट ऑफ अबाउट 70 मार्क्स विल यू नॉट गेट 17? 17 तो आ ही जाओगे, ले ही आओगे. राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. राइट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग, क्लियरली अंडरस्टैंड दिस. देयर इज, यू डोंट हैव टू स्कोर 180 हियर, इट डज नॉट गेट काउंटेड फॉर. राइट, यू हैव टू स्कोर मोर देन 67. दैट हैज टू बी योर फर्स्ट टारगेट कि मुझे पहले कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद देखी जाएगी मेरे से कितने सही कितने गलत. राइट, एंड इमेजिन दिस व्हेन यू, अभी विजन का किसी ने बोला कि विजन ने ए डाला था, किसी का आंसर नहीं है ये आंसर उसका. एवरी ईयर यू विल फाइंड 4 to 5 क्वेश्चंस जिस पे डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एंड देन यूपीएससी कम्स आउट विद देयर ओन ऑफिशियल आंसर की 4-5 क्वेश्चन मान के चलो जो इंस्टीट्यूट ने गलत बता दिया हुआ है. राइट, हाउ कैन यू कंप्लीटली बी सर्टन कि इससे मैं क्लियर कर दूंगा कट ऑफ? राइट, clearly you will have to rely on LR and quantitative aptitude. Right, so might as well invest your time there, because if you don't qualify this, it makes zero sense for you to study mains वगैरह. क्या फर्क पड़ता है फिर जब तुम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करोगे? कितना भी मेंस पढ़ लो, कोई सेंस ही नहीं बनता. राइट, एंड इट हर्ट्स द मोस्ट इफ यू कांट क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज सीसैट अटक गया. जीएस में अटक जाओ तो फिर भी मतलब चलो ठीक है, इंसान को लगता है कि यार कम पढ़ाई कर लोगी. अगर सीसैट की वजह से तुम्हारा प्रीलिम्स लटकता है, then it's फिर बहुत बुरा लगता है इंसान को. Right, and you will find we take special classes for people specifically only for CSAT. Right, you would find people जिनका 103 आ रहा था, CSAT अटक गया. Right, and it's a very common thing right now, very very common thing. Understand what the commission is trying to do. The commission is making things complicated for you. This year they did not really make maths complicated. It's just that कि number system दिखता है तो लोगों को पता नहीं लगता कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे. एंड पता नहीं फॉर सम रीजन यू थिंक इट्स अ मैटर ऑफ राइट कि तुम बताओगे कमीशन को ये नहीं पूछना चाहिए, ये पूछो. प्रोबेबिलिटी क्यों पूछ लिया आपने हमसे? क्यों नहीं पूछे? राइट, दे आर सेटिंग द एग्जाम ना.
तुम एस्पिरेंट हो, वो कमीशन है. दे वांट टू सेट इट हार्डर देन दिस, दे विल सेट इट हार्डर देन दिस. तुम कौन हो भाई? जिसको क्वालिफाई करना वो कर ही लेगा. Right? You have to understand this. You have to mold. You have to have a strategy. इस year complicated कर दिया उन्होंने. Specifically LR बहुत कम कर दिया उन्होंने. I think 8 to 10 questions LR के थे. Maximum questions quant के थे. But if you look at this year's RC, in the last 5 years, it's the easiest. Except for 1 or 2 odd questions, कोई question complicated नहीं था. So if you had just done 2 या 3 LR के questions right, or maybe 2 या 3 quantitative aptitude के questions right, and attempted all RCs, you would have easily seen this through. That is exactly what this person did. He cleared the cutoff. At the end of the day, what matters is whether you are qualifying or not. It does not matter if you are qualifying by scoring 68 or by scoring 168. It does not matter. Right? You just have to clear this cutoff and realize this, that this is an exam. Right? Nobody is trying to judge you for scoring 168 or a 68 here. It's just something that you have to leap over. Right? वो कर लो. Frame a strategy. Realize तुम्हारा कौन सा area of strength है, कौन सा area of weakness है. Right? And frame your strategies accordingly. ठीक है? Let's do this. They are clearly telling you, boss, कि नहीं होगा clear cutoff अगर if you are completely relying only on RCs. That's what they are trying to tell you. Right? So might as well change your strategy. Do this.